चेन्नई सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए 5th सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग और शॉर्ट, इसके अलावा सिलेबस भी यहीं पे आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट खोल के आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। इसके अलावा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इसी में से आपका पेपर आना है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन जब करोगे उसमें से भी काफ़ी निकल आएंगे। और इसके अलावा ये क्वेश्चंस कई रिपीट हुए हैं क्योंकि इनको मोल्ड करके पेपर में डाला जाता है। इसी तरह आपके पेपर में भी मोल्ड करके क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन एंड देन डिफाइन ड्यूलिज्म। नेक्स्ट गिव assumption of Solo's model and then what is balanced growth. Next, what are income depressing forces and then explain ease of high mass consumption. And next, what is import substitution, and next is what is labor intensive technique, and then what is a totalitarian planning, and next is what is development strategy. And next question is differentiate between economic growth and development, and next capital output ratio, and then self-reliance. Next question is progressive state, and then explain stationary state, and next define market failure, and then explain surplus value, and next is what is meant by entrepreneur, and then explain the terms DPA and SOC, and next define structural employment, and then actual rate of growth, and next is per capita income, and then capital formation, and next is explain capital formation, and then define vicious circles of poverty, and then neutral rate of growth, and next is any two assumptions of new classical model of growth, and then technological dualism, next social dualism, and then external economies, and next is stimulants, and then balanced growth, next is financial planning, and then capital intensive technique, and next is social overhead capital, and then Niti Aayog, and next price mechanism, and then export promotion, and next is define the concept of take off, and then what do you mean by stimulants and shocks, and next is define an underdeveloped economy, and then explain distributed unemployment, and then define the term capitalist sector, and next is what is the meant by variable capital, and next what is made by forward linkage, and then what is meant by purchasing power parity, and next is name the agency which prepares the human development index and mention any two components of HDI, and next what are the ways to enhance human capital formation, and next how can we reduce distributed unemployment in rural areas, and next state the formula for getting real per capita income, and then population growth rate at 8% per annum, national income growth rate at 8% per annum, calculate per capita income growth rate, and next is using wooden plow and tractors at the same time is called as dash. And next question is in which 5-year plan India adopted balanced growth strategy. And next question, what is meant by backward and forward linkages, and next in a capitalistic economy prices of commodities are determined by dash, and next what is meant by outward looking strategy. ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस। हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पेपर में आने हैं और इसमें से एक का आपने आंसर देना है। यूनिट फर्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, डिस्क्राइब इन डिटेल इट्स मेन फीचर्स। दोनों का आंसर सेम है।
पहले में सिर्फ फीचर्स पूछी गई हैं, दूसरे में अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है, इसमें आपने अलग से ये दे देना है। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एंड देन क्रिटिकली एक्सप्लेन द नर्किस थीसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन क्रिटिकली एग्जामिन नर्किस थ्योरी, ये सेम ही आ गया। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल नर्किस थीसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज its main limitations, and then distinguish between economic growth and economic development, discuss the major drawbacks of the income based measures of economic development, and then critically examine Leo's theory of unemployment supply of labor, and next explain the role of economic and non economic determinants in economic development, and then explain the determinants of economic development। अब है यूनिट सेकेंड, जिसमें क्वेश्चन इस तरह से हैं। एक्सप्लेन हॉवर्ड डॉमर मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड देन क्रिटिकली एग्जामिन बोइक्स थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूलिज्म एंड देन एक्सप्लेन द हॉवर्ड्स मॉडल ऑफ ग्रोथ 7 इज इट एप्लीकेबल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन टेक्निकल ड्यूलिज्म एज प्रपोज्ड बाय बेंजामिन हिजन्स, व्हाट आर इट्स मेजर वीकनेसेस एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ and then explain technical dualism as proposed by Benjamin Higgins, what are its major weaknesses, and then what is the difference between social and technical dualism, critically evaluate the theory of social dualism, and next critically examine Solo's model of growth, and then what are the possible growth patterns propounded by Solo's model, evaluate Solo model। यूनिट थर्ड में है critically explain the theory of big push, and next explain critically minimum effort thesis, and next explain Nurki's theory of balanced growth, and then discuss balanced growth strategy of economic development, and then critically examine the critical minimum effort thesis as explained by Liebstein with sustained economic development in underdeveloped countries। And next question is state and explain the theory of big push with its limitations, and then explain various stages or economic development as given by Rostow, and then critically explain Rostow's theory of stages of growth, and then explain Liebstein's critical minimum effort thesis, and next critically examine the Liebstein's critical minimum effort thesis, and next explain balanced and unbalanced growth strategy। नेक्स्ट है यूनिट फोर्थ, जिसमें है व्हाट इज़ प्राइस मैकेनिज्म, हाउ इज़ इट ऑपरेटिव अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग, एंड देन व्हाट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन, गिव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग and discuss in detail the major problems of economic planning for a developing economy, and then what are the objectives of economic planning, explain the problems faced by the planned economics, and then explain the objectives and problems of planning, and then explain the role of planning in underdeveloped economies। And next question, explain economic planning, what are the objectives of economic planning, and then explain the strategy of economic planning in underdeveloped countries, and next explain the explain the merits and demerits of labor intensive technique, and then distinguish between labor intensive techniques and capital intensive techniques, give the arguments in favor of labor intensive techniques, and next critically explain the choice of techniques। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर कैसा होता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इसको पंजाबी मीडियम में चाहिए तो इसके लिए भी कमेंट कर देना, इसको पंजाबी मीडियम में ट्रांसलेट करके डाल दिया जाएगा। और मे गॉड्स गाइडेंस विद यू ड्यूरिंग द एग्ज़ाम एंड मे यू बी एबल टू आंसर ईच क्वेश्चन करेक्टली। माई प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स आर विद यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।